Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is grade 7 English Unit 1 Words, Sentences and Questions and Answers. Now, if you watched the previous videos, you would know that we have already completed the reading, the explanation and the words meanings of this unit. And inshallah, in today's video, we will complete this unit. So, first, we will go through the words, sentences. Now, the first thing you will notice is that there is no margin drawn here in between the words and the sentences. So what you need to do is, obviously, you need to draw a margin when you copy this down in your notebooks. So let's start with number 1, hopping. The sparrow was hopping from one branch to another. Sparrow चिड़िया को कहते हैं. चिड़िया जो है वो एक टहनी से दूसरी टहनी तक, ब्रांच टहनी, एक टहनी से दूसरी टहनी पर जो है वो हॉप कर रही थी, फुदक के जा रही थी, कूद के जा रही थी. Now, number 2, grown up. Grown-ups are always busy doing something important. Grown-ups यहाँ पे मुराद है जो बड़े लोग हैं, जो adults हैं. Adults जो हैं वो हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं. Number 3, seem. He always seems to have a plan. ऐसा बज़ाहिर नजर आता है कि उसके पास हर वक्त कोई ना कोई प्लान होता है, यानी हर हालत के लिए, हर किस्म के हालात के लिए उसके पास एक प्लान है. Number 4, quiet. Now remember, this isn't quiet, ठीक है, this is quiet. अब ये जो है वो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, होमोफोन्स में से एक है, स्पेलिंग में डिफरेंस है. तो इस वाले quiet का मतलब होता है absolutely, utter, utmost. Here's the sentence. The weather is quite hot these days. सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि मौसम जो है वो इन दिनों आजकल काफी गर्म है. It's quite hot. Number 5 and the last one, way. अब यहाँ पे way का मतलब जो है वो रास्ते से नहीं लिया गया है, यहाँ पे जो है वो किसी काम को करने के तरीके से लिया गया है, a manner of doing something. Her way of speaking is quite strange. उसके बोलने का तरीका जो है वो काफी अजीब है. Now, just below the words sentences, you will find the questions and answers. Right? So, these are the questions and answers. We'll start off with question number 1. Who wrote the poem Bed in Summer? Do it yourself. आप इसे खुद से जो है वो attempt करें. Question number 2. When does the poet have to get up in winter? अब poet को जो है वो सर्दियों में किस वक्त उठना पड़ता है? So, अगर आपको explanation वाली video जो है थोड़ी बहुत याद हो, so if you watched that video, you would know when the writer or the poet of this poem wakes up in winter. The answer is, the poet has to get up at night in the winter. इसको रात को उठना पड़ता था. इसकी वजह जो सन था वो जो है जाहिर सी बात है विंटर में लेट राइज करता है, वो देर से राइज करता है, सनराइज देर से होता है. Question number 3. Why does the poet not like going to bed in summer? अब पोएट को, जो शायर है, उसको जो है वो समर में, गर्मी के मौसम में सोने जाने के लिए, बेड पे लेट के सोने के लिए उसको जो है वो क्यों जो है वो नहीं चाहता ऐसा कि वो समर में जल्दी सो जाए. Answer. The poet doesn't like going to bed in summer because it's still
day outside as the sun sets late in the summer. The birds are also hopping around in trees, and the grown-ups are still going about their business. So he wants to go out and play. अब जाहिर सी बात है, चूंकि पोएट जो है एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बात बयान कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं जाना पसंद है? क्योंकि जो है समर के सीजन में जो सन है वो काफी लेट सेट होता है, काफी देर से गुरूब होता है। तो अब जाहिर सी बात है तब तक उसके सोने का टाइम तो हो ही जाता होगा, यानी कि 8:30-9 बज जाते होंगे। एंड चिल्ड्रन यूजुअली गो टू बेड क्वाइट अर्ली। तो अब होता क्या था कि बाहर तो सूरज निकला होता था, बर्ड्स जो है वो अपनी जो है वो दरख्तों में जो है वो इधर उधर जो है वो फुदक रही होती थी, चहचहा रही होती थी। इसी तरीके से जो ग्रोन अप्स हैं, जो अडल्ट्स हैं, दे वर गोइंग अबाउट देयर बिजनेस, वो अपने जैसे उनके काम चल रहे फिर रहे होते थे, जैसे वो मसरूफियात चल रही होती थी वैसी चल रही होती थी। सो ही ऑल्सो वांटेड टू गो आउट एंड प्ले, ही वांटेड टू डू द यूजुअल थिंग। उसको वो काम करने का दिल चाहता है जो दिन में होते हैं आमतौर पे। So, number 4. Do you experience the same feelings as the poet does in the summer? Share your experience. Do it yourself. Now, the first thing is that in Pakistan, in most parts of Pakistan, the exact experience that the poet has talked about in this poem is impossible to एक्सपीरियंस। ये हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं इनको जो है इस किस्म का एक्सपीरियंस जो है वो गालिबन मुश्किल से ही होगा, क्योंकि जो है वो हमारे यहाँ सन फॉर इंस्टेंस अगर आप जैसे हम कराची में रहते हैं तो बहुत लेट भी अगर सन जो है वो सेट होता है तो इट्स अराउंड 7:26 और 7:30, सो दैट्स नॉट दैट लेट। ठीक है, अनलाइक वेयर द पोएट ग्रू अप इन द यूनाइटेड किंगडम। अब जाहिर सी बात है यूनाइटेड किंगडम चूंकि नॉर्थ पे है हमसे काफ़ी ज़्यादा, तो उसका वहाँ जो सन की सेट होने की और राइज होने की टाइमिंग है वो डिफरेंट होती है हमसे। लेकिन यहाँ पे अब आप ये तो नहीं लिख सकते एग्जैक्टली वैसी सेम फीलिंग्स होंगी, लेकिन आपकी क्या फीलिंग होती है जनरली, आप उसके बारे में 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिख दीजिए, एटलीस्ट 4 लाइन्स का। 4 लाइन से ज़्यादा हो सकता है, 4 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। Question number 5. What is the theme of the poem? अब जो poem है इसकी theme क्या है? Answer. The theme of the poem is that seasons affect children's lives. Their routine changes as in winter they have to get up at night as the sun rises late, and in the summer they have to go to bed by day since the sun sets late. Unwillingly, they have to adapt to these changes and maintain a healthy schedule. अब होता क्या है, इसकी सीन क्या है कि भाई जो बच्चे हैं उनकी जिंदगियों पे एक खास बड़ा असर होता है सीजन्स की चेंज का। और वो किस तरीके से होता है, जैसे कि पोएम में बात की गई है कि जो है उनका रूटीन बदल जाता है। विंटर में उनको रात को अंधेरे में उठना पड़ता है क्योंकि सन जो है वो देर से जो है वो राइज करता है। इसी तरीके से समर में जब जाहिर सी बात है सन लेट सेट होता है तो उनको सोना पड़ता है, तब जब सूरज निकला हुआ होता है तब उन्हें लेटना पड़ता है सोने के लिए। तो अनविलिंगली यानी ना चाहते हुए उनको अडेप्ट करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है इन तब्दीलियों के हिसाब से, ताकि वो एक हेल्दी शेड्यूल जो है वो मेंटेन कर सके। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू is that you have to copy down the words, sentences and the question answers in your notebooks, and I hope that you will complete this work as soon as possible, because I will very soon be asking you to submit your copies for checking. Allah Hafiz.